Hello everyone, welcome to another episode of LegalWiki. Today I'm delighted and thrilled to have Mr. Vivek Kumar Singh on my channel. Mr. Vivek Kumar Singh is working with Avishkar Singhvi as a litigating lawyer. It's going to be almost 5 years since he has been practicing before High Court, Supreme Court, NCLT and other courts. His practice primarily focuses on criminal and commercial laws. He's a first-generation lawyer, and today he will be sharing his experience with us about the struggle and difficulties faced by the young litigating lawyers. A very warm welcome to you, Mr. Vivek. I'm so excited to have this conversation with you. Thank you, Survi. It's been a pleasure to be with you and to conduct this interview. I'm so grateful to you that you have given me this opportunity. Thank you. So before we begin, I would again like to thank you for accepting my invitation on a very short notice and taking out time from your busy schedule, even when you're not well. I hope the conversation would be fruitful to all the young lawyers and especially the first generation lawyer who want to be a litigating lawyer. So with this, let's begin. So the very first question, how and when did you decide to be a litigating lawyer? Was this always your plan? To be honest, no. I always wanted to go into NDA. I wanted to be a pilot, but as the things have it, one of my friends suggested that why don't you opt for law? So I opted for law, and I find it very interesting, and the nitty-gritty of this profession, of this field, is really nice. And the second thing which I want to convey is that at the starting, कभी ऐसा था कि लोग देखते हैं कि lawyers लोग इतना पढ़ते हैं और इतने मोटे books, so I used to always run away from that. क्योंकि मेरे से नहीं होगा इतना पढ़ना. But 5 years in law college and the life has taught me that those books, मतलब उन books को you can read very easily, बहुत आराम से, and the judgments and all. So yes, I never wanted to become a lawyer, but now I am, and मजा आ रहा है. I'm enjoying it. So now how does it feel? Every bit of it is learning. Sorry. So how does it feel to be a litigating lawyer? So now when you finally decided and after the 5 years when you started practicing it, so how's your experience going on? You feel a sense of responsibility. Responsibility hai, and whether it's a drafting work or researching work, everything has to be done with a responsibility. You have a role to to perform and to give something back to the society as well. For example, बहुत सारे PIL होते हैं जो we file it before honorable courts. So those are for the betterment of society. So एक ये भी आप role play कर रहे हो. Plus you read a lot. You can also help the poor जिनके पास पैसे नहीं है to litigate और जो litigation नहीं कर सकते, कोर्ट में अपना केस नहीं लड़ सकते, उनके लिए various courts में different forums है legal rights करके, and जैसे for example Delhi High Court में भी उनका Delhi High Court legal services है, तो वहाँ भी you can go and provide them your best advice and you can fight for them. Nice. So it feels good. And जब भी आप कहीं जाते हो तो people say that you are a lawyer, तो वो एक what do you call it, X factor वो खुद ब खुद आता है कि he might be knowing this, because generally lawyers reads a lot, writes a lot. तो उनका एक point of view किसी भी political agenda पे या फिर किसी political mood question पे, they are always ready. So it feels good. So adding to this, is it the same experience which is being shown to us through the series or web series, movies, or is it entirely different? क्योंकि most of the students what I have seen is कि वो लोग web series देखते हैं, the famous one, the Suits. So is it the same or it's very different or what? Now that you mentioned this question, I'd like to say that सिर्फ Suits नहीं है. Suits के अलावा भी और सीरीज है. फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल जस्टिस, अभी जो मूवी आई थी 375. सो इन सारी मूवीज के थ्रू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दैट टू डिपिक्ट अ पिक्चर कि कोर्ट में ऐसा होता है, वेयर एज कोर्ट में नॉट 100% बट हाँ थोड़ा बहुत ऐसा रहता है.
where there is a client and examination होता है, chief होता है, कहाँ पे आपको कौन सा legal issue raise करना है, ये सारी चीज़ तो movies में सारा चीज़ डिपेक्ट नहीं होता, बट इन सारे सीरीज में my personal जो है अभी यहाँ पे Netflix पे I guess criminal justice is very nice because as an advocate when you step into court you should know what is the mentality of judge, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस एरिया से पूछ सकते हैं और उनको सेटिस्फाई कैसे करना है पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे, बिकॉज दीज आर लॉयर्स जॉब इज नॉट दैट ड्राफ्टिंग एंड रिसर्च, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन कोर्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू शुड नो द जज कि वो क्या पूछ सकते हैं और हमें उसको कैसे आंसर करना है सो दैट कि वो कन्विंस हो जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे you are fighting for the rights for the benefit of your client, so it's your responsibility to represent your client best interest in the court, so whatever way possible through judgments, through arguments, and arguments, most important thing, arguments, there are lots of advocate who does wonderful arguments, but what I realized over the period of time is that arguments has to be very persuasive. बहुत लोग जैसे I have seen newcomers, they shouldn't do district court में बहस के नाम पे they just say anything, ऐसा नहीं होता. Argument means that you have to be well versed with the facts. Law it's not just कि आप जाओ और कुछ भी बोल दो. So yes, responsibility तो है और प्लस काम भी काफी रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, so भी रहता है. बट जहाँ तक यंगस्टर्स हैं तो उनके लिए मेरा तो यही होगा कि आप पहले अच्छे से पढ़ो, क्योंकि किसी भी केस का फैक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो योर फैक्ट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड. लॉ तो बाद में है, पहले फैक्ट्स. बट आजकल यही लोग नहीं कर पाते, न्यूकमर्स. Correct. Thank you for sharing this experience. So one more thing, so like in college days we have studied a lot of theories like CRPC padha, CPC padha, but is it the same application in the court or the practical experience जो होता है काफी different होता है, और जो procedure हम लोग bookish में पढ़ते हैं, or is it different or is it the same thing which is being followed in the court? See, law is the same. For example, CRPC में 154 है कि पुलिस has to register. Application same way में हो जाता है. Exactly the same way the application is done, or practicality में I would say, for example, that's what I said कि CRPC 154 straight away says कि अगर cognizable offense है, police is under obligation to register FIR. There are various judgments also, Lalita Kumari and all. But what happened when you go to police station to register an FIR? They do not do, because once they register an FIR तो उनको फिर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, उनका बर्डन बढ़ जाएगा, काम करना पड़ेगा, तो मोस्टली दे डोंट. अब यहाँ पे जो हमने कॉलेज में पढ़ा है, अब यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी भी ये आ जाता है कि उस पर्टिकुलर चीज को डील कैसे करना है. बुक्स में तो हमने पढ़ लिया कि 154 में पुलिस है अंडर ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर FIR, नहीं किया तो देयर आर प्रोविजंस फॉर दैट, बट उसके लिए भी प्रैक्टिकलिटी, ये सब प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि इसको आपको डील करने आना चाहिए. बिकॉज आप कुछ टाइम के बाद इफ यू आर गोइंग टू बी अ इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, तो ये सारे प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने आएंगी. एंड दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड आल्सो इन माय अर्ली डेज कि जब आपका क्लाइंट FIR रजिस्टर करना चाहता है, वो पुलिस के पास जाता है, वो रजिस्टर नहीं करते हैं, तो मजबूरी हमें फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से अंडर सेक्शन 200 या 156(3) के थ्रू वो FIR रजिस्टर करानी पड़ती है. तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें. लॉ इज व्हाटएवर वी स्टडी वी अप्लाई इन कोर्ट, बट वो होता है ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल का एक्सपोजर अगर हो जाए किसी न्यू कमर को, तो वो उस लॉ को और बेटर वे में इम्प्लीमेंट करना चाहेगा और सीख जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करने में. So ये सारी चीजें, प्रैक्टिकल एक्सपोजर प्लेज अ वेरी 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 मेजर रोल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ न्यूकमर्स. So the theory part is different from whatever you experience in the court, and obviously it's not the same process. Sometimes the practicality would be different from whatever we are reading in the books, right? And for that, obviously, we need a lot of experience, and I think that experience would be coming initially through the internships also.
Right, you are correct. Internships में what I've realized during my internships also, productive interns काफी कम करते हैं. They generally focus on landing up to a big firm और किसी बड़े advocate के पास. But they forget one thing. उन places पे सीखने को बहुत सारी चीजें हैं. The way the firm work or way the senior advocate work, वहाँ पे newcomers को ये सीखना चाहिए adopt करने का तरीका. This is very important because आप जब इस प्रोफेशन में आते हो तो ये आप सोच के नहीं आते हो, मतलब that's what I feel, that's my perspective, कि मुझे सिविल ही प्रैक्टिस करना है या कमर्शियल लिटिगेशन ही करना है, क्रिमिनल करना है या टैक्स ही करना है या आईपीआर ही करना है. नहीं, ऐसा नहीं होता. The moment you come into this field, as what happened with me is that कि I joined this profession, उसके बाद I never knew that, I knew for the fact that I do not want to practice criminal law, नहीं होगा, because मेरा interest नहीं था उसमें. But when I started practicing with my senior, I enjoyed it. I started enjoying criminal law. ED के cases, PMLA cases and all ये सारे cases, ये आपको एक trigger point देता है कि नहीं, ये अच्छा है. And from now onwards, I am practicing this. And coming back to your question, interns के लिए, तो when they are in college, अभी they should try to understand law, because law is something, and I remember one of my seniors said काफी पहले कि अगर एक लॉ है, अगर आप उसको बार बार पढ़ते हो तो it gives a different interpretation at every time. So be well versed with the law. और जहाँ तक लाइफ ये फील्ड है, ये आपको सिखाते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल क्या होता है. तो ये सारी चीजें हमें स्कूल में, लॉ स्कूल्स में ये सिखाया नहीं जाता है कि प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. आर्ग्यूमेंट्स, फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होगी वहाँ पे जो बुक में है वो, बट इसका असली जो इम्प्लीमेंट है एंड यूज है, you will come to know once you come and start practicing law. So, especially you being the first generation lawyer, so what are the hurdles do you think the litigating lawyers faces? See, first and foremost thing that any litigating lawyer faces is financial crunch. To be honest, and I'll be very honest. तो वो थोड़ा होता है, but you know, life has its way. And what I have realized through very short span of journey in this career is that कि लाइफ वही देती है जो आपके साथ होना है और आप उससे सीखोगे. ठीक है. So because when I connect the dots since the time when I landed to this profession, I never wanted to become criminal lawyer, but I started enjoying. So life हमेशा कुछ और ही देगा, बट ऐसा हर्डल नहीं. टेक इट एज अ चैलेंज एंड फेस इट. बहुत लोगों की इंग्लिश वीक होती है. दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड हमारे प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज इफ यू आर गुड विद द लॉ, जजमेंट्स XYZ के साथ बहुत अच्छे हो, बट आपका कम्युनिकेशन नहीं है. सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? जो आप बोलना चाह रहे हो अगर वो नहीं बोल पाओगे तो जो जजेस हैं वो समझ नहीं पाएंगे, या आप ब्रीफ कर रहे हो वो समझ नहीं पाएंगे. तो कम्युनिकेशन इन दिस फील्ड और एनी अदर फील्ड, इट प्लेज अ मेजर रोल, और हमारे प्रोफेशन में बहुत ज्यादा है. बिकॉज इन ऑर्डर टू फाइट यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद एवरी वर्ड्स. So true. So one more thing. So for upcoming lawyers, what do you think would be the difficulties they would be facing? Because if you'll see, so I was having a conversation with one of the students, who was asking me that क्योंकि AI आ गया है, so would it be replacing the advocates? So would it be difficult for them, or what will be the hurdles they would be facing, the upcoming lawyers, or it would be the same as it is going on? I don't know, people are saying, but I don't think it will change that. AI is good, but जैसे हमारे पास अगर कोई केस आता है, so the kind of efforts we put in,
the kind of strategy we devise और किस केस को कैसे डील करना है, पता नहीं. I'm not against the technology, but somehow AI is a very good thing. But यहाँ पे when it comes to its practicality, वो थोड़ा सा issue है. I don't know कैसा क्या perform करे unless and until it comes. तो उस पे I do not want to comment, but hopefully अच्छा ही होगा. But I don't think so. So basically, they should not worry that AI would be replacing them, right? No, absolutely not. Have you It ever? cannot replace me. Yeah, so have you ever got nervous while arguing, or is it normal? See, nervousness is good because जब आप आर्ग्यू करते हुए नर्वस होते हो, आर्ग्यूमेंट से पहले नर्वस होते हो, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है कि आपका दिमाग प्रायोरिटाइज कर देता है आपके केस के पॉइंट्स को कि दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट्स. सो आपका दिमाग, आपका बॉडी मोशन में रहता है. सो people generally feel nervous but they take that nervousness in a very negative way. It is not negative नहीं हो. That's a very good thing, but the only thing अब उसको use करने आना चाहिए, right? So I remember it was I think 2 or 3 days in this profession and मुझे मेरे सीनियर ने ब्रीफ के लिए बोला, ब्रीफ दे दिया and he told me कि आप जाओ कल ये मैटर, I think साकेत कोर्ट का कोई मैटर है, साकेत कोर्ट में आपको बस अजॉर्नमेंट लेनी है, ये बोलना. Being first day in court, I was nervous obviously अजॉर्नमेंट लेने में. So ये तब तक रहेगा जब तक आप कोर्ट से रूबरू और कंसिस्टेंटली आप अपीयर नहीं हो रहे हो, because once you start appearing on a daily basis normally, so फिर वो डर निकलते जाता है, नर्वसनेस कम होती जाती है. Only with the और experience. कुछ नहीं. Right, धीरे it will go on. There's nothing to worry. अगर आप जैसे कि I'm telling about Delhi, if you go Bihar, if you go UP, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हिंदी में ही आर्ग्यूमेंट होता है, बिकॉज हिंदी में वो कंफर्टेबल है, दे आर्ग्यू इन हिंदी. सो ये सारी चीजें भी है, बट हिंदी में भी आर्ग्यू करने में दे फील नर्वस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर क्लाइंट इंटरेस्ट इज एट स्टेक. थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, बट इट इज गुड. दैट्स व्हाट आई फील. बीइंग नर्वस इज गुड. So the other day, I was listening one of the speech of a very renowned lawyer, the senior advocate, and he was also talking about is it so normal that I get nervous when I am in front of the judge, and there's a like butterfly ऐसा movement हो रहा होता है. I was like कि यार even after having 20-25 years of experience, he's saying that. So it's so normal for us, like we are just having like 4 or 5 years of experience, right? Absolutely. In fact, what happens is कि जब आप कोर्ट में आर्ग्यू करते हो, आप आर्ग्यू कर रहे हो, and when you come out from the court, then you realize I should have said this point. ये बोलना चाहिए था, इस पॉइंट को मैं ऐसे भी बोल सकता था. Exactly was saying the same thing. Right. So ये हमेशा होता है और ये हमेशा रहेगा. For example, अगर आप ड्राफ्टिंग भी करते हो, आपने एक ड्राफ्टिंग की, उसको कंप्लीट किया, रख दो, उसको अगले दिन देखोगे आप उसमें फिर चेंजेस करोगे, आधे घंटे के बाद देखो आप फिर चेंजेस करोगे. तो ये दिमाग कंसिस्टेंटली काम कर रहा होता है आपके काम को और निहारने के लिए, ठीक है, बेटर बनाने के लिए. सो बट एक बार जो हो गया, आपने अगर सही चीजें करी है, ठीक है. बट आई थिंक एक वीडियो आई वाज वाचिंग काफी पहले, आई गेस हरी साल्वे सर का वीडियो था. वहाँ पे he got a advice from eminent lawyer, Mr. Nani Palkhiwala. So he said something about the argument. So he advised him, whenever you argue in court and you argue up to your best effort, if you come out and think, is there any lawyer in this world who could have done better than you? If the answer is yes, start working hard. If the answer is no, relax. This was so inspiring. ये होता है हमेशा हर चीज में. You keep on improving things, improvising things. So ये सारी चीजें, nervousness, it's a part and parcel of this profession. But
what I'll say, इस प्रोफेशन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंसियरिटी एंड कंसिस्टेंसी. ये किसी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में, हमारे प्रोफेशन में भी, बिकॉज इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ यू आर सिंसियर इन योर वर्क, you will excel no matter what, whatever the odds, whatever be the hurdle, it doesn't matter, because आपका जो फोकस है वो एक्सेल करने पे, तो hurdles कभी मैटर नहीं करता. So moving on, one more thing. So in litigation, does contact, a lot of contacts matters a lot. So what's your view on nepotism in this field? We have heard actually a lot of things. So I actually wanted to know from you, does contact really matters? On nepotism thing, I do not want to comment on that, but I don't feel कि ऐसा कुछ है. Second thing, contacts as in what? If I'm taking this question this way, that कि contacts help you getting clients, yes. Contacts play a major role, yes. Because अगर आप independent जाओगे तो आपके पास contacts नहीं है, तो आप client. What about contact with judges? Contact with judges? Because there might be a lot of cases where the lawyer might knowing the judge beforehand. So No. In that case, what happens? A, judge will recuse himself. B, lawyer will not take the case. He'll give the case to some other person. So there has to be decorum that has to be maintained, and there has to be a sincerity, because at the end लोगों का trust है judiciary पे. So ऐसा कुछ नहीं, these are just the rumors or the late person thing, but ऐसा नहीं, because I remember a case जहाँ पे हमारे पास 54 का मैटर था. तो जो जब जज रोस्टर चेंज हुआ, तो वहाँ पे जो जज आई थी वो मेरी सीनियर की जूनियर थी, तो she was the judge. But the moment she came to know that we are in that matter, she recused herself. That's how judiciary, that's how whole system works. So with respect to nepotism and all, ऐसा कुछ नहीं है. Let me clarify once again, because I'm also first generation lawyer and I'm continuously working. So as such, लगा नहीं, if you know how to do a hard work, disregarding the fact you have talent or not, if you know how to do a hard work, you will excel 100%. And just trust yourself. You will climb up the mountains. That's not a big thing. Correct. So basically it depends upon you also, how you are performing individually. Yeah. Right. Rather than, showing to others, you should be convinced by yourself कि ये काम मैंने किया है, इससे बेटर मैं अब नहीं कर सकता. कोई और XYZ कर दे, इससे बेटर मैं नहीं कर सकता. ठीक है. So अगर उस पर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होने का चांस है, डू इट. कहीं ना कहीं यू हैव टू कम डाउन एट अ पॉइंट जहाँ पे यू हैव टू से कि दिस आई हैव डन माय बेस्ट. ठीक है, दिस इज माय बेस्ट एफर्ट. चल. सो एट द एंड आपको खुद को भी सेटिस्फाई करना पड़ता है, एंड आपका हार्डवर्क दिख जाता है, वन वे और द अदर वो दिख जाता है. So moving on, are you allowed to take independent cases, or are you taking right now? Or have you ever thought of going independent, even you're from like first generation lawyer? Have you ever thought of? Definitely. यहाँ पे I have been doing independent cases not just in Delhi, outside Delhi also, and Kolkata, Ahmedabad, Bangalore, and Delhi maybe I have been doing cases, criminal matters and all. So yes, I'm allowed to take, but unless and until मेरे सीनियर के काम को हैम्पर नहीं करे. But I'll tell you one good thing about taking independent cases is that you are working on your senior's case, वो तो है. अब उसमें से आपको टाइम निकाल के आपका केस भी करना पड़ेगा. So आप जो यहाँ पे सीख रहे हो, ठीक है, आप उसको अपने केस में अप्लाई करो, so आप और बेटर रिजल्ट दोगे. हाँ, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि you have only 24 hours. कभी ये, so that you have to balance, that you have to manage. My message to the youngsters are like कि
स्टार्टिंग के 5 साल मेहनत कर लो अच्छे से. From 6th year onwards, you'll start seeing the result. छोटा ही सही, but you'll start seeing. So in independent matters आपको सिखाता भी बहुत कुछ है, because you have to do research, you have to look for some different strategy. तो क्योंकि हर client एक different problem के साथ आता है. कभी किसी का पार्टीशन सूट है, कभी किसी का सक्सेशन है, कभी किसी का किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल हो गई है, कभी किसी को बेल चाहिए. सो ये सारा चीज रहता है एंड यू लर्न अ लॉट इन योर मैटर्स. सो अभी तो नहीं, आई गेस अ ईयर और सो आई एम थिंकिंग टू गो इंडिपेंडेंट. सारा चीज सही रहा तो डेफिनेटली आई विल बी इंडिपेंडेंट. So the reason I asked this question because recently I was reading newspaper or some blog. I read about that most of the seniors does not allow their junior lawyers to go like take the independent cases. So I just wanted to know, is it like with every advocate or there are some exceptions there who actually allow their juniors to take independent cases? No, there might be some seniors, but the person with whom I have worked till date, they have allowed me to take independent cases. They have even told me कि अगर मेरा कोई matter है which is colliding with your matter, go and do your matter first and then come in with matter. So I'm lucky that मेरे साथ ऐसे seniors रहे who has always helped me in my time. So I'm just lucky. But ये सारी चीजें भी है कि टाइम कम रहता है, बट आपको ये देखना है कि आपके सीनियर का काम करना, बिकॉज ही इज रिलाइंग ऑन यू. जो भी उनका काम है हर चीज से लेके. So moving on, what are the important skills other than research a law student should equip themselves to master in the field of litigation? What do you think? I'll say hard work. Hard work is first skill. Second, work on communications. अगर आप हिंदी में भी किसी से बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है और बात सामने वाले तक कैसे पहुंचानी है. सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल, बिकॉज जब आप रिसर्च इज वन थिंग, जब आप जजमेंट भी पढ़ते हो तो उस जजमेंट में क्या था, कैसे हुआ, आपको ये बताने आना चाहिए. एंड the third thing which I'll say is that reading habit. Correct. आप अपनी reading habit को बहुत अच्छा करो, so that कि जब वो बड़े बड़े judgments होते हैं, जब आपको कुछ पढ़ना होता है, प्यून ऑर्डर हो गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बड़े केस में बहुत सारे वॉल्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, so उनको आप स्कैन कैसे करोगे फटाफट if you do not have that reading speed. ये सारी चीजें लोग सुनते तो है बट करते नहीं है. Implementation problem. Right. So there is no implementation. और एक और चीज है कि कॉलेज में भी इन सारी चीजों को प्रायोरिटी या तवज्जो नहीं दिया जाता है, जो कि होना चाहिए. आप अपने रीडिंग हैबिट्स, रीडिंग स्पीड को बढ़ाओ. जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, that's it. Right. So in order to become extraordinary, you or just like you said, if somebody wants to master this field, which is, so for that he has to work hard, he has to do something extraordinary things. Reading speed बढ़ाए, because I remember there was this book which I was reading few times back. So Nani Palkhiwala had a very bad handwriting. जब वो नोट बनाते थे तो बहुत बैड हैंडराइटिंग में बनाते थे, बट उनकी रीडिंग स्पीड जो थी बहुत अच्छी थी. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर आपकी हैंडराइटिंग, अगर आप नोट बना रहे हो, आपको समझना है, दैट इट्स गुड, बट इन ऑर्डर टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स, रीड डॉक्यूमेंट्स फटाफट जहाँ पे आपका टाइम बचे, यू हैव टू हैव अ गुड रीडिंग स्पीड एंड ट्राई टू बी एफिशिएंट. अगर आप एक काम करने में 5 घंटे लगा रहे हो या 8 घंटे लगा रहे हो, यू आर नॉट एफिशिएंट. उसी काम को आप 2 घंटे में कर सकते हो, उसको करके दूसरा काम कर सकते हो. सो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इट मैटर्स.
क्योंकि जब आप इन दोनों चीज में अच्छे हो जाओगे तो आप अपना टाइम बचा सकते हो एंड यू कैन डू अदर थिंग्स आल्सो. इट्स नॉट दैट कि सुबह 10 बजे से लेके रात में 9 बजे तक ऑफिस काम काम काम, बिकॉज आपको अदर चीजें भी करनी होती है. स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल्स, ये सब आपको उसी टाइम में ही मैनेज करना होता है. if you want to read some good books or if you want to read some judgments, so आपको इसके बीच से ही टाइम निकालना पड़ेगा अपने काम में से. So efficiency is also very important too. I'll suggest this. Thank you so much for giving this such inputs. Okay, moving on to my last question. Any mistake did you commit while pursuing your career and you don't want others to repeat it? All the young lawyers. Surbhi, I don't think I committed any mistakes because the statement I'm making, because everything happens for a reason. So चीजें जैसे होती गई, I kept doing it. So हाँ, but एक mistake which I want to point out is that कि starting में reading habit, I did not have that kind of reading habit. But over the course of time, and this profession has taught me, if you want to beat the game, you have to. So वो एक चीज है. And yes, I'll ask the viewers also कि आप इन सारी चीजों पे अच्छे से काम करो अगर आपको लिटिगेशन में आना है. एंड हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज आती है फाइनेंशियल को लेके. तो if you have that wherewithal, because obviously this will take time, 5 years, 6 years, ऐसा भी होगा कि आपको कम पैसे मिले, ऐसा भी होगा कि आपको ठीक ठाक पैसे मिल रहे, बट फिर भी वो चीज़ नहीं, तो you never know what life gives you. So prepare your mind. If you are entering into litigation, this field is like कि it has been said numerous times that this profession is a jealous mistress. So जब आप एक बारी आ जाते हो तो आप बाहर भी नहीं रह पाओगे, और जब यहाँ पे रहते हो तो फिर भी आप बेचैन रहोगे. So it's better to enjoy the journey. Right. Because I have seen also many people who have switched from litigation to in-house or corporate, they still business. So ये एक चीज रहता है which go hand in hand. Right. Thank you so much. So there are no mistakes. And most important thing, it has been said time and again, and it has been reiterated by many people. Learn from your mistake. This is important. If you start learning that, things gonna be easy. I hope I have sorted out all the questions. Absolutely. This was a really nice experience you have shared, and the truth. What happens in reality. ऐसा है, and what I'll also say at the end. Sorry, I'm taking a little longer. It's but okay. Start your practice from district courts. See the procedure. Try to observe it. आप internship भी करते हो, तो rather than coming to Supreme Court directly, आप वहाँ पे जिस तालुका में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आप वहाँ पे जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करो आप इंटर्नशिप, और चीज़ों को देखो कि इनिशिएट कैसे होता है. अगर कोई क्लाइंट आएगा, उसको रिकवरी सूट फाइल करना है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, फाइलिंग प्रोसीजर क्या है, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट क्या हो रहा है, चीफ कैसे होता है, क्रॉस कैसे होता है किसी भी, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल. लोग एफिडेविट कैसे बनता है, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जब केस के साथ आप एफिडेविट फाइल करते हो, वो इम्प्रॉपर रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर केस कैन गेट डिसमिस्ड. सो ये सारी चीज भी छोटी चीजें बट बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आई विल से कि जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, वहाँ पे देखें, चीजों को समझे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ले. Thank you so much, Vivek, for sharing the wonderful experience. So here we have come to end of our session. Thank you once again. I hope the insights which you have given would be fruitful to all the future lawyers who wants to pursue litigation as their career option. Thank you so much. I hope so. Thank you so much, sir. Thank you so much for inspiring everyone. Thank you.